next chapter is about money supply and inflation. This is about the money supply, inflation, causes of inflation, and measures of inflation. First is what is money. As we all know that money is a medium of exchange, a measure of value, a store of value over time, and a standard for deferred payments. चीज खरीदने के लिए गुड्स खरीदने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है stored over time, standard for deferred payments. Can be used as a medium of exchange, measure and record the value of the goods and services. Can be had for a period of time to make future payments or agreed measure of future receipts and future payments. If we summarize that it says that कि कोई भी चीज सर्विसेज खरीदने के लिए एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है कोई भी गुड्स और सर्विसेज हो उसकी वैल्यू कितनी है वो मेजर करता है मॉनेटरी टर्म्स में और कोई भी चीज हम होल्ड करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी उसका हम अंदाजा लगा पाते हैं विच इज मनी द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्स फ्रॉम द मनी सप्लाई money supply if we say that a stock of money in circulation in the economy at given point of time कोई भी कंट्री की इकोनॉमी में जितना भी पैसा है वो सर्कुलेशन में है टोटल स्टॉक ऑफ मनी is called the money supply. Measures of money supply. First is the narrow money, M1. M1 means currency with public plus demand deposit with banking system, other deposit with RBI. एडवर्स बैंक मैनेजमेंट में सीएबी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इस बेस पर होते हैं मनी सप्लाई बेस पर जिसमें से कुछ टर्म्स दिए होते हैं हमें उसमें से M1, M2 या M3 जो भी टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ता है इट्स वेरी यूजफुल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट So as we were talking that M1 is the currency with public के पास जो पैसा है वो बैंक में जो पैसा पड़ा है वो और आरबीआई के डिपॉजिट के फॉर्म में जो पैसा पड़ा है उसको M1 मनी कहा गया है सेकंड इज M2 का मनी M1 मतलब करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट एंड आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है वो प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स पोस्ट ऑफिस के सेविंग में जो भी मनी पड़ा है जो भी पैसा सप्लाई है मनी सप्लाई है वो M2 नेक्स्ट इज द M3 means M1 as we see currency with public demand deposit banking system RBI plus time deposit with bank मतलब TDR recurring deposit तो time based deposits है वो next is the M4 means M3 plus all deposit with post office saving banks excluding national saving certificate. So the terms we have used is the currency with public as we see that the money circulation less cash held by the bank पब्लिक के पास जो पैसा पड़ा है वो लेकिन उसमें बैंक में जो कैश पड़ा है वो कंसिडर नहीं करना है दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विच आर रीपेबल ऑन डिमांड मतलब सेविंग बैंक इंटरेस्ट में करंट डिपॉजिट में जो भी पैसा है डिमांड डिपॉजिट है and other is time deposit means otherwise demand deposit otherwise repayable on time like term deposits recurring deposits the time fixed period पर रखी जाती deposit को time deposit कहते हैं as we all are familiar with this next comes the topic of inflation as we have also known that what is inflation but technically we can say that it refers to the sustained general rise in price level of the essential commodities it means goods and services commodities जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं होता रोज हम यूज करना ही पड़ता है रोज हमारी डेली एक्टिविटी में इंक्लूड होता है उसके बिना हम जो डेली एक्टिविटी है उस next to the inflation as we all know that what is inflation but we can technically say that the inflation refers to the general rise in price level
of essential commodities. It means goods and services. हमारी डेली एक्टिविटीज रूटीन में जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उसके प्राइस में राइस और बढ़ावा जो होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. एसेंशियल कमोडिटी मीन्स बेसिक कमोडिटीज लाइक गेहूं है, आटा है, और जो भी बेसिक नीड्स होती है उसको एसेंशियल कमोडिटीज बोलते हैं. इन्फ्लेशन मीन्स लीड्स टू द फॉल इन द परचेसिंग पावर बिकॉज प्राइस बढ़ा हुआ है तो बड़े हुए प्राइस से हम बहुत कम चीजें खरीद सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लीड्स टू द fall in the purchasing power, which is also called that each unit of currency buys fewer units of goods and services. पहले 2000 में जो भी चीजें आती थी अब 2000 में बहुत कम चीजें आती है which is called fall in the purchasing power means each unit of currency buys fewer units of goods. Erosion in the purchasing power, and it can also be measured as the annualized percentage with the general index over time. टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि एक समय पर जो चीज जितने की मिलती है वही चीज दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत कम या ज्यादा पैसे मिलती है. सो टाइम इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन and it has both negative and positive effects. If we consider negative effects, as we all see that fall in the purchasing power, currency बहुत कम गुड्स को खरीद पाती है, परचेसिंग पावर कम कर देती है. So these are the negative effects. But positive effect क्या है कि कोई भी इकोनॉमी अगर रिसेशन में, डिप्रेशन में, अगर उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है मीन्स वो इकोनॉमी एक्टिव हो रही है, रिसेशन से बाहर आ रही है, which is very good from the economic point of view. It means जो इकोनॉमी रिसेशन में है उसमें अगर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव साइड है कि उसकी इकोनॉमी एक्टिव हो रही है. दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कैसे होता है? डिमांड पर इन्फ्लेशन. इट मींस एसेंशियल गुड्स की प्राइस अगर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी मींस लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो उससे क्या होगा? गुड्स का शॉर्टेज आएगा, और गुड्स का शॉर्टेज आएगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी. मींस अल्टीमेटली प्राइस बढ़ी क्योंकि डिमांड बढ़ गई है. एंड देयर इज द कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन. इट मींस प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट्स की जरूरत होती है, लेबर कैपिटल, उसमें अगर बढ़ावा होगा तो प्रोड्यूसर के पास दो ही ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि वो आउटपुट एडजस्ट करे, मतलब प्रोडक्शन के यूनिट से वो एडजस्ट करे, या फिर प्राइस को बढ़ा दे. अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसको हम कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन करेंगे क्योंकि इनपुट्स के प्राइस बढ़ने से गुड्स की प्राइस बढ़ी है और गुड्स की प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है. सो इसको कॉस्ट. इन्फ्लेशन को हम मेजर भी कर सकते हैं. मेजर करना हो तो कैसे? जैसे अब technically we can say that a price index is a weighted average prices of selected groups of goods and services relating to a base year. इसमें दो, इसमें एक पॉइंट है कि बेस ईयर सिलेक्ट करना है और एक है प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड ऑफ द गुड्स सर्विसेज रिलेटेड टू बेस. The formula is the calculation of inflation means the price in the current year minus price in the base year divided by price in the base year. तो यहाँ पे एक चुका है. Calculation of inflation means price in the current year minus price in the base year into 100 divided by price in the base year. If we see the example, it suppose there is a good X. Good X. उसका प्राइस 2021 में 400 रुपए, 400 रुपीज, और उसका प्राइस गुड एक्स का 2022 में सपोज 500 रुपीज हो गया. So if you want to measure the inflation, calculate the inflation, we can calculate the price in the current year. It means current year
मीन्स बेस ईयर होगा इसका 2021. So the price in the current year will be 500. Price in the base year 400. So you can calculate that the price in the current year means 500 minus 400 means 100. And base year, price in the base year was the 400. So if we calculate according to this formula, means 100 divided by 400, it means 25, means 0.25. And into 100, it means 25%. So it is the inflation rate is inflation rate in this case is 25%. So we have just measured at a small level the calculation of inflation. So it is called that कि 2021 में जिस 400 रुपए की मिलती थी 2022 में 500 रुपए की मिलने मतलब 25% उसमें प्राइस की बढ़ोतरी हुई है. So inflation rate is 25%. And similarly, there are some indexes like wholesale price index. होलसेल गुड्स की प्राइस में जो चेंजेस होते हैं फ्लक्चुएशन होते हैं उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं. और इसमें जो कॉर्पोरेशन के बीच की लेन देन होती है जो परचेसेस एंड सेलिंग होती है उसको ही ध्यान में लेते हैं. It is food inflation index means edible perishable goods. खाने लायक फूड्स कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं. फूड इंडेक्स मीन्स खाने की चीजें की जो गुड्स होते हैं उसके प्राइस में जो चेंज होता है उसका प्राइस इंडेक्स फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं. दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हाउस होल्ड लेवल पे हम कंज्यूम करते हैं जो एंड यूजर एंड गुड्स एंड जो परचेस कंज्यूमर होते हैं उसके लेवल पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं. और एक है जीडीपी डिफ्लेटर. इट मींस चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स ऑफ द करंट ट्रेंड नॉट सो बेसिक. कोई भी नया गुड्स लॉन्च हुआ है मार्केट में तो उसके प्राइसेस में कितने चेंज हुआ नेक्स्ट ईयर में उसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं क्योंकि वो करंट करंट में अप्लाई होता है. मींस अभी वो गुड्स पहले नहीं था लेकिन अब नया लॉन्च हुआ है तो उसका जो इंडेक्स है वो नेक्स्ट ईयर को ही मिलेगा हमें. So GDP deflator is the change in the price of the goods of the current trend. और वैसे इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए it is not so much significant. Thank you friends. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए. चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.